Assalamu alaikum everyone. Welcome to STEAM Education. How are you all? I hope you all are doing good. You all are doing well. So today I'm again here with another letter. Can you guess which letter is this? This is letter S. Letter S. And the sound of letter S is S. S. So my lovely students, this is how the capital letter S looks like. And this is how the small letter S looks like. They both look same, but the difference is their sizes. So students, can you tell me the word which have S sound? Like snake, like sun. स्टूडेंट्स, अब आप भी सोचिए कि आपकी फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है जिसका नाम एस यानी कि साउंड से स्टार्ट होता है. अपने टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करेगा. सो चलिए अब चलते हैं अब आपकी बुक की तरफ. Hello, meet the letter S. It sounds sun. S for sun and S for swan. S. Now look at this picture. You can find so many objects that start from letter S, like sun, ship, sparrow, swan. Now instructions for the teachers. Dear teachers, young learner को हमने fun engaging activities के ज़रिए engage रखना है, and STEAM activities are the best way to keep them engaged. So for the science portion, discuss with them about the sun. Discuss with them about the sunlight, energy, what advantages we get from the sun. For technology portion, show them the video of letter S and listen the sound of letter S. For engineering portion, provide them a Play-Doh and ask them to make a sun. For arts portion, guide them to color an object on next page which start from letter S. Then for math portion, ask them to count the object near them which start from letter S. Friends, move on to the next page. Hands on. Color the objects with initial sound S. अब आपके सामने 3 different object हैं. देखिए, सोचिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट लेटर S से स्टार्ट होता है. आपने उस पर कलर करना है. The next is tick the pots with the letter S. अब आपके सामने different pots हैं और में different letters लिखे हुए हैं. जहाँ पे भी S लिखा हुआ है, जिस pot पे S लिखा हुआ है, आपने उसके नीचे tick लगा देना है. Now the formation of letter S. Fill color with the crayon according to the instruction. अब आपने क्या करना है? With the crayon आपने letter S को trace करना है. The formation of capital letter S. Pull back, go around, slide down, back around. This is how we write capital letter S, and the small letter S is pull back, go around, slide down, back around. This is how we write a small letter S. Now trace and write with the pencil. So my lovely students, now you have to trace the capital letter S and small letter S with a pencil. उसके बाद आपने इसको खुद से भी लिखने की try करनी है. So my students, I hope अब आपको लेटर S की रिकग्निशन हो चुकी होगी. आप लेटर S का साउंड बता सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन पता है. आप अपना एड किट देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट लेटर S से स्टार्ट होता है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू लेटर. अल्लाह हाफिज.